Due to heavy rain, a major landslide has blocked the NH 702D road below Chanki village. All vehicles are barred from using this stretch until clearance. As a part of ongoing effort to strengthen public trust and cooperation, the Women Police Station Kohima conducted a one-day seminar on women's safety and crime against women at the Kezeki Community Hall. A magisterial inquiry into the September 24 violence in Leh, which left 4 dead and many injured, has been ordered by the Leh Deputy Commissioner. Beniwal has invited the public to share any information related to the incident between October 4 and 18 at the Deputy Commissioner office in Leh. The United States will now provide Ukraine with intelligence to target the Russian energy infrastructure, including oil refineries and pipelines. Report also said Ukrainian President Zelensky privately urged Trump to supply the missiles during a recent meeting, and the US President appeared open to the request. Hello viewers, this is Renchimi Himjoy and you're watching English Primetime. Now the news in details. Due to heavy rain, a major landslide has blocked the NH 702D road below Chanki village. All vehicles are barred from using this stretch until clearance. Light vehicles commuters are advised to take the alternate route via Chanki Mekokla Junction. The closure is effective until further notice. As a part of ongoing efforts to strengthen public trust and cooperation, the Women Police Station Kohima conducted a one-day seminar on women's safety and crime against women at the Gezeki Community Hall. The event was held in collaboration with the Gezeki Women Organization. The officer in charge and her team led an engaging and interactive session addressing community concerns and exploring collective strategies for enhancing women's safety. Participants expressed appreciation for the initiative and shared valuable inputs. Officials say that they look forward to more such community collaborations in the future. A woman in Dimapur fell victim to a digital payment fraud at a local ATM, losing Rupees 5,000 after being duped by a scammer who faked a medical emergency. The scammer approached her while she was withdrawing cash, claiming an urgent need for the money to rush to a hospital and propose a cash swap. Trusting him, the woman handed over the money while the scammer showed a fake successful transaction on his phone before fleeing. The fraud was discovered later when the victim checked her bank statement and found no record of transaction. CCTV footage reviewed by bank officials identified the suspect as a repeat offender involved in similar schemes. Authorities urge the public to be cautious when strangers approach at ATMs or public places with such offers, as these are often sophisticated scams. Nagaland Minister Jacob Jimomi addressed the Silver Jubilee celebration of the Chang Union Chumukitima, praising the leaders and members, past and present, for their dedicated efforts in uplifting the Chang community. He recognized the community's vital role in development and prosperity of Chumukitima. During the event, Jimomi also released the Jubilee souvenir commemorating the milestone. He extended his best wishes, expressing hope that the Chang community will continue progressing with a gratitude and hard work, guided by the blessings of Almighty God. Nagaland Minister Jacob Jimomi shared a heartfelt message at the 12th WSBAK Children's Festival held in Newland Town from September 30 to October 2, 2025. Organized by the Newland Area Church Leaders Fellowship, the event drew over 6,900 registered participants and overall attendance of more than 10,000.
Calling the festival a reflection of God's unfailing love for children, Jimomi spoke on the challenges faced by the younger generation in today's fast-changing world. He urged parents to take an active role as both mentors and friends to their children. Our children are our greatest assets. Let us invest in them to become responsible citizens, he said, while extending his best wishes for the event's success. The Nagaland Pradesh Congress Committee has welcomed B. Longyepom, former Nltv leader from 49 Tamlu Assembly constituency in Longland district, into the Congress party effective October 1, 2025. The NPCC stated the Pom's move signals growing public trust in Congress and its leadership, particularly under MP Subungmarin Tamir. The party expressed confidence that POM's experience and dedication to the public service will further strengthen its mission to serve the people of Nagaland with sincerity and commitment. The Science Club of St. Joseph University successfully held the second edition of the Cognizance Fest on September 30 under the theme Exploring Nature's Language Through Science. The event held at the University Auditorium brought together students, faculty and special guests for a day of creativity, innovation and scientific engagement. The highlight of the inauguration was an inspiring address by guest of honor, Engineer Akali A. Su, Senior Environmental Engineer at the Nagaland Pollution Control Board. She urged students to apply scientific knowledge towards solving environmental challenges and promoting sustainable development. On 2nd October, continuous heavy rainfall caused the Janji River to overflow, leading to flooding in Ajarakuri village of Jorhat district, Assam. The rising water level inundated several low-lying areas, disturbing daily life and prompting concern amongst local residents. Authorities are closely monitoring the situation, while villagers have appealed for immediate relief measures to address the worsening flood condition. ৰবীন্দ্ৰ লেবুলাৰ যিজন ব্যক্তিৰ ঘৰ ভাঙি নিছে তেখেতে চৰকাৰী ঘৰ কোনো পোৱা নাই আজিলৈকে, কিন্তু নিজেই যি হাজিৰা কৰি টকা 2 পইচা পায় তাৰে এতিয়া পকী ঘৰ বনাইছিলে, এটা পাকঘৰ আছিলে, পাকঘৰটো লৈ গ'ল আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে পকী ঘৰটো উটুৱাই লৈ গুচি যাব। তেওঁলোকৰ কোনো হেৰি নাই, চাকৰি বাকৰি নাই, দিন হাজিৰা কৰি চলে, সেই টকাৰে এটি ঘৰ বনাইছিলে কটনৰ ঘৰ, কিন্তু সেই ঘৰটোকো ইতিমধ্যে পানীত গা যাব। আৰু হাঁহ ছাগলী গৰু ইয়াৰ পৰা কিমান কি গৈছে এইটো নিৰ্দেশত কৰিব নোৱাৰি, সেইটো কিছুদিনৰ পিছত। Assamese singer Zubeen Garg died due to drowning while swimming off Singapore's St. John Island, not while scuba diving as initially reported, according to updated media and police report. The 52-year-old artist was in Singapore for a cultural celebration, India-Singapore ties, when the incident occurred on September 19. The Singapore police force confirmed no foul play and shared the autopsy report with the Indian High Commission, which also lists drowning as the cause of death. Garg was seen jumping into the water wearing a life vest, but later reportedly removed it before re-entering the water. Meanwhile, Assam police arrested Garg's manager Siddharth Sharma and event organizer Shamkanu Mahanta in Delhi for alleged culpable homicide, criminal conspiracy and negligence. They are now in 14-day police custody in Guwahati. Garg's wife Karima Sakya expressed confidence in the ongoing investigation by a 10-member society formed by the Assam government, stating the family hopes to uncover the full truth of Zubeen's final moments.
A major road accident on National Highway 38 near Bogapani in Tinsukia, Assam has raised serious concern over highway safety and transport regulation. Around 2:45 a.m. on Thursday, a Maruti van carrying 8 family members collided with a stationary transport carrier near Old Valley School. The van was returning from Durga Puja Bantal visit on Navami night. All passengers were injured, 3 seriously, and 1 woman remains in critical condition at Assam Medical College and Hospital, Dibrugarh. The transport carrier had been parked on the highway for 5 days, reportedly on refinery instruction to avoid festival traffic. While it had warning lights, no barricades or safety measures were in place. Locals says no pandals were near the site, raising questions about the prolonged roadside parking. Another vehicle, an ultra bus, was also found parked 2 kilometers away, sparking fears of further accidents. Experts and residents blame poor enforcement and inadequate safety monitoring during the festival. A tragic road accident in Ting this morning has sparked outrage in the local community. A woman from Chamwa village, Dhakurai, was fatally hit by a speeding Swift car, allegedly driven under the influence by Satyadeep Kuria. She was rushed to the Ting FRU but was declared dead on arrival. Tension flared when the driver, his brother and their mother were found at the same hospital, leading to a mob gathering and attempting to confront them. Police had to intervene to control the situation, with senior officials from Nagaon stepping in to restore order. The incident has left the community in shock, with calls for strict action against the accused. এই গাড়ীটো একদম এনেকৈ মাৰি সিহঁতে বোলে ডাইৰেক্ট মদ খাইছে নেকি আমি নাজানো কিন্তু গাড়ীটো আহি এটা মানুহ লৈ গ'লগৈ বহুত স্পীডত আহিছিল নেকি ৰাস্তাৰ ছাইডতে আছিলে হ'লে এটা মানুহ লৈ গ'লগৈ খুন্দিয়াই গাড়ীটো পেলাই দিলে গাড়ীত লাগি গ'ল গাড়ীটো চলাইছিলি গাড়ী মই চলাইছোঁ কি গাড়ী চুইফ্ট চলাইছোঁ তাৰপিছত লাগি গ'ল আগত আহি গ'ল দৌৰ মাৰি দিল মোৰ আগত আহি ৰাখা হৈ গ'ল খাৰা হৈ গ'ল মই ব্ৰেক মাৰিছোঁ ভালকৈ ব্ৰেক মাৰিছোঁ পুৰা হাত ব্ৰেক মাৰিছোঁ হেণ্ড ব্ৰেকো মাৰি দিছোঁ কিন্তু গাড়ীৰ ইমান মানে ওচৰত আহি গ'ল যে ৰাখা নাই মানে খাৰা হোৱা নাই মদ খাইছিলি ৰাতি খাইছোঁ এতিয়া খোৱা নাই ৰাতি খাইছিলি অলপ খাইছোঁ ইমানো খোৱা নাই যে মই গাড়ী চলাব নোৱাৰোঁ অলপ খাইছোঁ ইমানো খোৱা নাই তই দেখোন এতিয়া লটং পটং কৰি আছ মানুহ টেনশ্যনত লটং পটং অলপ মই বহুত টেনশ্যনত পৰি গৈছোঁ মই বচাব মোৰ লগত 4টা আছিল চব পলালে কিন্তু মই অকলে ইয়াত ৰখি আছোঁ মই ৰখি দিছোঁ মই পলোৱা নাই মই গাড়ী চলাইছোঁ মই পলোৱা নাই দাদা মই পলোৱা নাই নাম সত্যদীপ পুৰী স্কুল ৰিজাৰ্ভ মই পলোৱা নাই দাদা আমাৰ বাইদেউ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলে ওলাই আহোঁতে এখন ডাঙৰ গাড়ীয়ে খুন্দিয়ালে যিকেইটা চালকে মানে চলাইছে 2টা মদ খাইকে কপনা হৈ আছে মানে নিচাত আমি আহি পাওঁ মানে তেখেতৰ জীৱই নাই মানে এতিয়া তেওঁ ঢিং এফআইআৰটো আছে কি নাম বাইদেউ বুলু ঠাকুৰীয়া খোজকাঢ়িব আহিছিল ৰাতিপুৱা তেখেত সদায় আহে আজি ওলাই আহিছিলে ওলাই আহোঁতে গাড়ীখনে মাৰি থৈ গ'ল 2টা মদ খাই ক'ব নোৱাৰে এতিয়াও সিহঁতে কি কৰিছে সিহঁতে অনুভৱেই কৰা নাই যে এখন ঘৰ নাই গোটেই গাঁওখনে মৰমৰ মানুহজনীক লৈ গ'ল এই গাড়ীটো একদম এনেকৈ মাৰি সিহঁতে বোলে ডাইৰেক্ট মদ খাইছে নেকি আমি নাজানো কিন্তু গাড়ীটো আহি এটা মানুহ লৈ গ'লগৈ বহুত স্পীডত আহিছিল নেকি Former Manipur Chief Minister and Congress leader Okram Ibobi Singh on Tuesday criticized the BJP-led state government for undermining constitutional values and delaying local body election. Speaking at the Manipur Pradesh Congress Committee office during the 156th birth anniversary of Mahatma Gandhi, Singh highlighted Gandhi's enduring legacy of non-violence and rural development. He said Gandhi's dream of empowering rural India, comprising nearly 70% of the population, has been ignored in Manipur, where local body
the election remain pending. Instead of elections, caretakers have been appointed, he said, calling it a blow to democracy. Singh urged the government to comply with the Manipur High Court's recent directive to hold polls within 6 months. The MPCC also observed the 121st birth anniversary of former Prime Minister Lal Bahadur Shastri during the event. Devotion for Goddess Durga runs deep at Durga Bari Mandir in Agartala, Tripura, where ancient traditions from the monarchical area are still observed, including the presence of the king's sword during rituals. On Mahanavami, devotees' enthusiasm was strong as the puja draws to a close, while festivities and prayers continue and the wait begins for next year's celebration. त्रिपुरा में 500 साल का पुराना पूजा है राजा का। ये राजा का परंपरा में चल रहा है। कुल देवता है माँ दुर्गा। तो यहाँ पर 149 साल से इस मंदिर में चल रहा है। राज्य के आमूल में जो हुआ था ऐसे ही चल रहा है। यहाँ राजा का एक तरवा आते हैं, राजा की बेट के साथ राजा का ऑनर के लिए एक तरवाल रहता है, राजा की ऑनर के लिए चल रहा है ये। और एक भी तरवाल आता है चंडी मंडप से, इसको अष्टमी के दिन खून चढ़ाना पड़ता है। Durga Puja festival is being celebrated across the globe with great pomp and dignity amongst the Bengali people, especially wherever they are based in. And now in our small and tiny state of Tripura, the people, cross-section of people in fact, they celebrate Durga Puja with great dignity and honor. We have come here, every year we try to come over here to offer Anjali. And this time also we have come over here on this spiritual place which has got a significance, history. त्रिपुरा में 500 साल का पुराना पूजा है राजा का। We'll be right back after a short break. Keep watching Nltv. Welcome back. Now to the next news. The Mizoram Movement for All Pension Scheme held a peaceful rally in Aizawl to renew the call for the restoration of the All Pension Scheme in place of the National Pension System. Government employees from across the state participated in a gathering on Wednesday, voicing concerns that the NPS does not provide adequate security for workers after retirement. MIMOB's leaders explained that under the current arrangement, the state government is required to contribute 10 to 18% of employees' monthly salaries to a central agency. This has already led to an expenditure of about rupees 6.5 crore every month from the state's budget, a figure that will only increase in the future. This is the protest against NPS. As we all know, NPS is not good as OPS and UPS, and the Mizoram government hasn't updated anything right from 2010. And we want to scrap this existing NPS. Under one government, same work, same pension. That is what we demand. And we need guaranteed and secure pension. And we want a better pension scheme. As I would like to aware people that Mizoram NPS has no improvement since 2010. And NPS, as it is, corporate's profit, not a government's profit. And OPS is totally a government's profit. Mizoram government has full authority to adopt NPS,
and it also has full authority to scrap it. So we want old pension scheme or better and secure pension scheme. This is the demand that we are having today. This is the protest against NPS. As we On Wednesday night, during Navami celebration, a major disaster was narrowly averted in Chorangi Bazar, Katikora, Kachar district when a short circuit occurred on an 11 kV power line right as the area was crowded with Durga Puja devotees. The electrical fault led to a sudden outbreak of fire on the live wires, triggering panic among the public. However, quick action by the local residents who immediately alerted the power department helped prevent a tragedy. Departmental staff promptly disconnected the power supply, preventing the fire from spreading further. Notably, a similar incident took place on Tuesday in Ganir Gram Bazar when a live wire fell due to a short circuit. Locals have blamed repeated incidents on negligence by power department officials in various areas of Katikora. খবর পাইয়া বাড়ির থেকে বার হইয়া আইছি আর দেখ 10-15 মিনিট লাইন জ্বালাইলে আসলো বাদে লাইনম্যানকে ফোন করিয়া কারেন্ট খাটাইলো আইছি এটা লাইনও বেজান জোড়া গেলা আছে ওটা বদলাইয়া দিবার দাবি এলাকার পক্ষ থেকে খবর পাইয়া বাড়ির থেকে বার The India Meteorological Department, Agartala, has issued a rain alert across Tripura during the ongoing Durga Puja and Dussehra festivities. South Tripura is under an orange alert with the possibility of heavy to very rainfall, thunderstorms and lightning at the isolated spot today. West Tripura, Sebaijala, Komati and Dhalai districts are under a yellow alert with heavy rain and thunderstorms likely in some areas. On October 3, light to moderate showers are expected across the state with a chance of heavy rain in 4 districts. Authorities have urged citizens to stay cautious during celebrations as wet weather may affect outdoor events. Two residents in Sarupatar under Borbatar police station were targeted in a planned theft on the night of Navami. Thieves broke into the homes of Debojit Sen in Borbatar town and Gunin Sakya, a teacher from Sewakuri, while the owners were away. From Sen's house, the bulkers forced open a locker and stole gold ornaments and cash worth over 10 lakhs. Valuable worth around 5 lakhs were taken from Sakya residents in a similar break-in. Borbatar police have visited both sites and launched an investigation into the incident. লগত মানে মই ধৰক ৰাতিপুৱাটো ওলাই গ'লোঁ মোৰ মানে দোকানখন খুলিলোঁ আৰু দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে তাৰপিছত মানুহজনী ৰাতি 8:30মান বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল পূজা চাবলৈ আনুমানিক 8:30 বা 9টাৰ ভিতৰত গ'ল তাৰপিছত আৰু খবৰ পোৱা গ'ল যে ভাইটিৰ ঘৰত লকাৰ ভাঙি চুৰি কৰিলে মই ল'ৰাকে আহিলোঁ আহি পেলাই চালোঁ যে আমাৰ ঘৰতো তেনেকুৱা ভোন পইচা যিমান আছিলে মোৰ ভাইটিৰ পইচা যিমান নোহোৱাকৈ লৈ গ'ল পিছফালে তালা ভাঙি আৰু মোৰ ওচৰৰ মানুহ চিনাকি মানুহ ওচৰৰ মানে ঘৰত ৰিলেশ্যন থকা মানুহ হ'ব পাৰে অহা যোৱা কৰা মানুহ হ'ব পাৰে মোৰ যিহেতু মই পিছফালে অহা যোৱা মোৰ পিছফালৰ দৰ্জা ভাঙি সোমালে তলা ভাঙি সোমালে তাকে সন্দেহ কৰিছোঁ সন্দেহ কৰি আছোঁ এইটো আমরা আলোচনা কৰিম সম্পত্তি ধৰক মোৰ মানুহজনীৰ ভাগৰ সোণৰ নেকলেছ চেইন আঙুঠি তাৰপিছত আপোনাৰ খাৰু কাণৰ আছিলে মোৰ নিজৰ আঙুঠি আছিলে মোৰ ল'ৰাৰ আঙুঠি আছিলে মোৰ ছোৱালীৰ তৰুণীবিয়াৰ যিমানকেইটা সোণৰ অলংকাৰ আছে সেইকেইটা আছে আৰু মোৰ কেইদিনৰ বজাৰৰ পইচা প্ৰায় 75 বা 80,000 হ'ব মানে খুচৰা পাতিটো মিলাই পেলাই তেনেকুৱা মাইটো মোৰ ভাইটিৰ ভাগৰ ভাইটিৰ মানুহজনীৰ বিয়াৰ যিমান সোণ আছিলে চব লগৰ আৰু পইচা আজিতো পইচা কিমান আছিল মই ক'ব নোৱাৰোঁ মোটামুটি 10-12 হ'ব চাগে আনুমানিক ভাইটিৰ ভাগৰ মোৰ নাম দেৱজিৎ সেন ঘৰুৱা নিকনেমটো হ'ল দেৱু সেন
ভাইটিৰ নাম প্ৰগতিজন এনে ঘৰত চুকিবলৈ মাতে চবে আৰু ঘটনাটোতো আমি একচুৱেলি ক'ব নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ মানুহজনী 8:30মান বজাত বা 9টাৰ ভিতৰত তেনেকৈ ওলাই গৈছে ঘটনাটো আনুমানিক হ'ব পাৰে 9:30 বেলেগো আমাক ফ'ল' কৰি থাকে কেতিয়া ওলাই যাম আৰক্ষী আহিছে শুনাৰ লগে লগে আৰু 10-15 বজাত আহি পাইছে সন্ধিয়া কাৰোবাক সন্দেহ কৰি যদি মই এইটো পঢ়া শুনাৰ মানে ভিতৰতে আলোচনা কৰি তাৰপিছত মই হেৰি কৰিম আজি মানে সেই 7টা বজাত আমি বৰঠাই পূজালৈ ওলাই গ'লোঁ দুজনে আছিলোঁ মই আছিলোঁ মোৰ মিছেছ আছিলে তাৰ ওলাই যোৱাৰ পিছত আমি হ'ল কি আমি গ'লোঁ তাৰপৰা 9টা বজাত ঘূৰিলোঁ ঘূৰি আহি দেখি যে মই পুতুককৈ মই গাড়ীখন তাত ৰখালোঁ মিছেছ সোমাই আহিলে আহি মোক মানে কৈছেহি অকণমান কান্দিছে আৰু কান্দি কৈছে যে ঘৰত চুৰ হ'ল তাৰপৰা মই আহি চাইছোঁহি যে এই গডৰেজটো এনেকৈ ভঙা আছে আৰু গডৰেজটো মানে হ'ল কি হেৰি কৰি এই লকাৰটো ভাঙিলে লকাৰটো ভাঙি তাৰপৰা যিমানখিনি সোণৰ অলংকাৰ আছিলে আৰু পইচা প্ৰায় 35,000 সেইটো লৈ গৈছে আৰু ইফালে এটা ৰুম আছিলে এই ছোৱালীজনী সেইটো ভাঙিছে ভাঙি তাৰপৰা নিছে তাই যিমানখিনি সোণৰ অলংকাৰ আছিলে নহয় গোটেইখিনি অলংকাৰ ইতিমধ্যে মানে তাৰপৰা লৈ গুচি গৈছে আৰু পিছফালে দৰজাখন তেওঁলোকে চিটকানিটো এৰুৱাই পেলাই পিছফালে সোমাইছে টাইমটো ঠিক আমি ওলাই গৈছোঁ 7টা বজাত 7টা অলপ পিছতে চাগে আৰু তাৰপৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত আমি গোটটো নাজানো আৰু কিন্তু আহি পাইছোঁ 9টা বজাৰ আগে সেই সময়খিনিৰ মাজতে কৰিছে আৰু High tension gripped Mispora village in Tamara during Durga Puja celebration following the death of a youth allegedly caused by police assault. Locals have demanded the immediate arrest of the accused, Habibul Sheikh alias Habul, but police have yet to make an arrest even 48 hours after the incident. Intensifying public anger, residents also accuse police of pressuring the victim's family to perform last rites prematurely and attempting to shield the accused. Senior police officials have visited the area to assess the situation, but no significant progress have been reported. The community remains restless, demanding swift justice. Chennai police on Tuesday detained several RSS workers for conducting a Guru Puja and holding a special Shaka session at a government school near Borur without proper permission. The event, part of the RSS sanitary celebration, was held on school premises, which authorities say violates regulations. The detained members were taken to Ayapantalgal Government Community Welfare Center. Senior BJP leader Damili Sai visited the RSS workers and criticized the police action, calling it an attempt to suppress peaceful nationalist activities. She accused the Tamil Nadu government of targeting such events while overlooking more serious issues like drug trafficking. In Jammu and Kashmir, the Handwara police have attached the property of a suspected terrorist handler Nazir Ahmad Gania in Balpora village, Gupwara. Police says Gania, operating from Pakistan-occupied Kashmir, was actively guiding terror activities in Handwara. The action was taken after legal approval and highlights the police's strong stance against terror network. Meanwhile, in Sopore, police carried out raids at the home of individuals linked to the banned group Jama'at Islami. The search led to the recovery of incriminating material under the UAPA. Authorities urged the public not to support anti-national elements, warning of strict legal action. Defense Minister Rajnath Singh has issued a strong warning to Pakistan, saying any aggression in the disputed Sir Greek area will be met with a resounding response that could change history and geography. Speaking at a military base in Bhuj on Dussehra, Singh said the Indian Army is fully prepared and recalled the 1965 war when Indian forces reached the outskirts of Lahore. He also confirmed the success of Operation Sindoor, aiding that India seeks peace but is ready for any provocation. Singh performed the traditional Shastra Puja with troops, saying weapons are a means to uphold righteousness, not just power. साथियों, आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद
सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता। The electronics component manufacturing scheme has received investment proposal worth rupees 1.15 lakh crore, far exceeding its original target of 59,000 crore, Union IT Minister Ashwani Vaishnav announced on Tuesday. He added that employment projections have also surpassed expectation, with proposal promising 1.41 lakh jobs, well above the target of 91,600. The application window for capital equipment segments remain open. Electronics Component Manufacturing Scheme, ECMS, Electronics Component Manufacturing Scheme, the applications closed on 30th September. We have received applications worth 1,15,351 crore. It's a historic number, it's a record number. Unprecedented investment applications have come in the Electronics Component Manufacturing Scheme. ये स्कीम जिसमें 1,15,351 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की एप्लीकेशंस आई है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में, ये दर्शाता है, ये क्लियरली शो करता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है और जो पिछले 11 वर्षों में जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है दुनिया भर का भारत पर, ये ट्रस्ट आज इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में परिणत हो रहा है. इट्स रिजल्टिंग इनटू इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड extra production against a target which was again a very ambitious target we had taken of 59,350 crore rupees investment. We have received applications for 1,15,351 crore against a production target of 4,56,500 crore, 4.5 lakh crore. We have received production estimates more than 10 lakh crore. 10,34,000 crore. So that is more than double what we had targeted. Employment, we had targeted 91,600 persons. Here the employment which is expected is 1.5 times at 1,41,000 persons employment. So this is very significant, and I would like the department to make a detailed presentation on the entire application process and what we have received so far, which are the sectors, which are the components which have received maximum support. 3 people died when a speeding SUV collided with a stationary container on the national highway in Bihar's Gaimur district on Tuesday. The accident took place near Chajubur Bokre area of Gaimur district. The 3 people who died were Muslim Ansari, Munna Ansari and Razia Khatun. They were on the way to attend a program at the Kaskor Mazar. अच्छा, कितने लोग स्कॉर्पियो में सवार थे? ये 9 आदमी थे। तो कितने लोग की डेथ हुई है, क्या जानकारी है? 3 आदमी को डेथ हुआ है, 3 आदमी सीरियस में है और 3 आदमी यहाँ पे 5 लोग आए थे, 3 डेड बॉडी, मतलब 8 लोग हुए थे। 8 लोग आए थे।
सर कुछ पता चल पा रहा है कहाँ के रहने वाले हैं? ये सासाराम के रहने वाले हैं। पटना ये एक स्कॉर्पियो है कंटेनर। In Haryana's New, a man and two Muslim clerics were arrested for forcibly marrying a minor to convert her religion. The man from the same locality lured a girl, and police says he confessed to the act. Despite the minor's refusal, the clerics conducted the marriage. The man is in custody, and the minor's statement has been recorded in court. दिनांक 26 तारीख को पीड़ित परिवार द्वारा एक शिकायत पेश की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र का ही एक व्यक्ति उनकी लड़की को शादी करने के लिए बला फुसलाकर भगाकर ले गया। जिस संबंध में हमने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने लड़का और लड़की को बरामद किया, लड़की का मेडिकल करवाया, उसकी काउंसलिंग करवाई, उसके न्यायालय में बयान दर्ज करवाया और साथ ही साथ हमने उस लड़की को भी गिरफ्तार किया। लड़के से जब हमने पूछताछ की तो जो हमारा मुख्य आरोपी है, जो व्यक्ति है, उसने बतलाया कि इस दौरान उसने ज़बरदस्ती लड़की पर दबाव बनाया धर्म परिवर्तन के लिए, उसकी मर्जी के विरुद्ध उसके साथ संबंध स्थापित किए। इस संबंध में हमारे द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 26 तारीख को गिरफ्तार करके 27 को हमने उसको न्यायालय में पेश किया और उसका 4 दिन का रिमांड लिया। 4 दिन का रिमांड आज खत्म होने के बाद आज दोबारा हमारे द्वारा उसका रिमांड लिया गया 2 दिन का। इसके अलावा जो मौलवी थे जिन्होंने निकाह किया था, उनको भी पूछताछ के लिए कल हमने बुलाया। पूछताछ के दौरान उन्होंने हमें बताया कि जो निकाह था वो निकाह भी गलत तरीके से किया गया। जो व्यक्ति उन्होंने निकाह में दर्शाए गए हैं वो व्यक्ति वहाँ पर उस टाइम मौजूद नहीं थे। जब उन्होंने लड़की से उसकी सहमति मांगी तो लड़की ने सहमति नहीं दी थी, उसके बावजूद उन्होंने उसका निकाह किया। जिन व्यक्तियों को निकाहनामे में दिखाया गया वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उस आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उनको भी गिरफ्तार किया गया। जो मौलवी हैं उनका भी 2 दिन का रिमांड लिया गया। आगे बाकी मुकदमे में जो भी कार्रवाई होगी आगे जारी है। अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी अगर इस मुकदमे में किसी और की संलिप्तता आती है। This Thursday, County Maidan in Patna will host the Grand Ravan Dahan as a part of the Shera celebration. Thousands are expected to attend with cultural performances and eco-friendly fireworks planned. Artisans, including members of the Muslim community, are putting final touches on the massive effigies, highlighting communal harmony. Chief Minister Nitish Kumar and other dignitaries are set to join the event, celebrating the victory of good over evil. गांधी मैदान पटना में मुख्य कार्यक्रम होता है रावण दहन का और काफ़ी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं हमारे जो जिले से भी और बाहर से भी, ग्रामीण क्षेत्र से भी। तो उसी को लेकर के आज हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। बैरिकेडिंग पूरा कर दी गई है और जो प्रवेश होगा आम लोगों का वो गेट नंबर 4 से लेकर के 12 तक जो गेट हैं उससे प्रवेश होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 और बाकी निकास भी उन्हीं गेटों। पुतले बन के तैयार हैं, खड़े होने के कगार पे हैं। बाकी लंका दहन, अशोक वाटिका सबकी तैयारी चल रही है। कल समय के अनुसार जो है पूरे कार्यक्रम यहाँ आयोजित होंगे और अशोक वाटिका से सीता जी को छुड़ा के लंका में आग लगाने के बाद कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के पुतलों का दहन होगा और इको फ्रेंडली आकर्षक आतिशबाजी का आयोजन। तो करीब 15 दिन हो गए बनाते हुए रावण को। पहली बार यहाँ आए हैं पटना के, पहले भी कई बार? नहीं, पटना तो पहली बार आए बनाने की नहीं। वैसे और भी काफी जगह काम चल रहा है, अपना बरेली में काम रावण का चल रहा है, पानीपत है, वो पंजाब है, कई जगह चल रहा है काम अपना। कोई परेशानियां नहीं है, एक दूसरों से है नहीं है, मोहब्बत है, प्रेम है, जब तो एक दूसरे का काम चल रहा है। जिस दिन प्रेम मोहब्बत खत्म हो जाएगा काम कहाँ से मिलेगा फिर। गांधी मैदान पटना में A 20-year-old student from Delhi, Lucky Chaudhary, was found hanging in his BG room in Kota Sector 2 on Wednesday. The police broke into the locked room and shifted the body for autopsy. Lucky had studied at a local coaching institute last year, but his current status is unclear. The reason for his death is still unknown, says officials. ये विज्ञान नगर में एक साइड हुआ है, सूचना पर आए थे, बॉडी को उतराया गया, मोर्चे में भिजवाया गया। अग्रिम कार्रवाई परिजन आने पर की जाएगी। दिल्ली निवासी था। सर ये कोचिंग अभी कोई ऐसा कंफर्म हुआ नहीं, अभी स्टूडेंट प्रथम दृष्टया है नहीं है कोचिंग का। किस चीज़ की कोचिंग है? अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, अभी कंफर्म हुआ नहीं है, इसके परिजन आने पर कंफर्म होगा। दिल्ली का है? दिल्ली का। क्या नाम है बच्चे का नाम? लक्की चौधरी। ये विज्ञान नगर में एक साइड हुआ है, सूचना पर आए थे, बॉडी को उतराया गया, मोर्चे में भिजवाया गया। अग्रिम कार्रवाई परिजन आने पर की जाएगी।
Former President Ramnath Kovind speaking at the Rashtriya Swayamsevak Sangh Vijay Yadashmi rally lamented that good people avoid politics and urged youth to engage in it. He credited RSS founder Keshav Baliram Hedgewar and Dr. Babasaheb Ambedkar for shaping his values of national unity and social harmony, emphasizing RSS stance against casteism. Kovind also mentioned he is writing a book titled Triumph of the Indian Republic. The rally marked the RSS 100th anniversary since its founding in 1925. नागपुर की ये पवित्र धरती आधुनिक भारत के विलक्षण निर्माताओं की पावन स्मृति से जुड़ी हुई है। उन राष्ट्र निर्माताओं में ऐसे दो डॉक्टर भी हैं जिनका मेरे जीवन निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। वे दोनों महापुरुष हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। मैं युवाओं से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे जन सेवा में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति में भागीदारी करना जन सेवा का एक प्रभावी माध्यम है। किसी विचारक ने ठीक ही कहा है कि राजनीति से परहेज करने की गलती करके, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि राजनीति से परहेज करने की गलती करके समाज के अच्छे लोग अपने ऊपर कम योग्य व्यक्तियों के शासन का भार ढोना स्वीकार कर लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों से मैं अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे मैं हाल ही में संपन्न कर पाया हूं। उसे मैंने ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, मैं फिर रिपीट करता हूं, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई जर्नी एंड माई स्ट्रगल्स, ये मैंने उसका नाम दिया है। पूरी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी जीवन यात्रा और संघर्ष में जिन आदर्शों ने मुझे शक्ति व प्रेरणा दी है वे भारतीय संविधान और राष्ट्रीय जीवन मूल्यों पर आधारित है। मेरी जीवन यात्रा में स्वयं सेवकों के साथ जुड़ाव तथा घनिष्ठता से मेरे जीवन मूल्यों के कैसे दृढ़ता मिली, इनसे जुड़े प्रसंग भी मैंने अपनी आत्मकथा में शामिल किए हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष के अंत तक मेरी पुस्तक आप सभी पाठकों तक पहुंच जाएगी। नागपुर की ये पवित्र धरती आधुनिक भारत के विलक्षण निर्माताओं की पावन स्मृति से जुड़ी हुई है। उन राष्ट्र निर्माताओं में ऐसे दो डॉक्टर भी हैं। A 75-year-old man named Sangru Ram, a resident of Uttar Pradesh, Jaunpur district, died on Tuesday, a day after he married a 35-year-old woman at a temple in the district. Police received information about Sangru's demise and reached the spot before sending the body for post-mortem. Family members of Sangru and some locals allege he died due to a heart attack, but police haven't yet confirmed the allegations, saying they will wait for a post-mortem before commenting. थाना गौरव बसापुर की एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें कुचमुच गांव के रहने वाले एक संगरू राम नामक 75 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और उसमें ये तथ्य संज्ञान में आया है कि उसने 29 तारीख को मंदिर में शादी किया था और शादी के अगले ही दिन 30 तारीख को मॉर्निंग में उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पे थाना गौरव बसापुर पुलिस द्वारा जाके बॉडी को कब्जे में लेके और पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो शादी दिन पहले हुई थी, ऐसे में मौत प्रथम दृष्टया जांच में क्या लग रहा है? परिवार ने आशंका जताई है। प्रथम दृष्टया तो परिवार वालों का भी कहना है, जो भी आसपास के लोग हैं, कि कोई ऐसी गंभीर घटना का कोई ऐसे संकेत नहीं बता रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, लेकिन घटना की पूरी जानकारी के लिए कि क्या हुई है, कैसे हुई है, बॉडी को पोस्टमार्टम है। On the night of October 1, a serious road accident occurred at Banbari near Letu under Letu police outpost amid Durga Puja celebration. Two Pulsar motorcycles collided head-on on National Highway 315 coming from Margarita and Letu direction respectively. Both riders were critically injured and rushed to Margarita FRU for treatment. Their identities remain unknown. Letu police have recovered the damaged bikes and are investigating the incident.
A magisterial inquiry into the September 24 violence in Leh, which left 4 dead and many injured, has been ordered by the Leh Deputy Commissioner. Sub-Divisional Magistrate Nupra Mukul Bediwal has been appointed as the inquiry officer and is tasked with investigating the circumstances leading to the law and order breakdown, police action and deaths. The violence erupted during a shutdown called by the apex body Leh, demanding statehood for Ladakh and safeguard under the 6th schedule. The 4 victims, Jigmeid Dorji, Rinchen Dadul, Stanzin Namkyal and Tiswang Darchin, died in the firing by the security forces. Beniwal has invited the public to share any information related to the incident between October 4 and 18 at the Deputy Commissioner's office in Leh. He urged all to cooperate for a fair and transparent inquiry. The final stage of the International Olympiad on Financial Security has kicked off at the Siberian Federal University with around 600 students from 40 countries participating. The 5-day event includes competitions, expert sessions and cultural activities aimed at boosting financial, legal and digital literacy. President Putin welcomed the participants, praising the Olympiad for nurturing young talent and expanding global cooperation. Students from Latin America, Africa, the Middle East and Asia are attending, with many praising the event's organization and even talking about Siberia's fast-changing weather. The event wraps up on October 3 with an awards ceremony. The United States will now provide Ukraine with intelligence to target Russian energy infrastructure, including oil refineries and pipelines, according to the Wall Street Journal. President Trump has approved sharing targeting data and is also considering sending Tomahawk cruise missile and Barasuta Mountaineers to Kyiv. These weapons could significantly extend Ukraine's strike range, even reaching Moscow. Meanwhile, Russia has warned of consequences if the U.S. send Tomahawks through. Foreign Minister Lavrov claims such weapons won't change the battlefield situation. Reports also say Ukrainian President Zelensky privately urged Trump to supply the missiles during a recent meeting, and the U.S. President appeared open to the request. At least 26 people were killed when a boat capsized in Niger River in Kogi State, southern Nigeria. Local sources say the accident took place while the boat was carrying traders from Ibaji to a market in Ilushi, Edo State, before it overturned in river. The death toll is expected to rise. Former Indian off-spinner Ravichandran Ashwin went unsold at the ILT20 auction, despite being the only player with a 6-figure base price of USD 1,200. The 39-year-old, who retired from the Indian Premier League, had registered for the UAE-based league and made himself available for the full season. Though he wasn't picked in the accelerated round either, he could still be signed later as a wildcard. Ashwin recently joined Sydney Thunder in Australia's Peak Bash League and is also set to represent India at the Hong Kong Sixers in November. Meanwhile, Dubai Capitals picked up Akshay Wakera, and Unmuk Chand was drafted by Abu Dhabi Knight Riders. The U.S. Supreme Court on Wednesday allowed Lisa Cook to remain as a Federal Reserve Governor for now, declining to act on the Trump administration effort to immediately remove her from the central bank. In a brief unsigned order, the High Court said it would hear arguments in January over President Donald Trump's effort to force Cook off the Fed board.
This is all we have in English Primetime. For more